Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel with the question answers of the same chapter, Madam Rides the Bus. So here we do have the first question. What was Wally's favorite pastime? वल्ली का सबसे फेवरेट पास टाइम क्या था? वो क्या करना पसंद करती थी अपने फ्री टाइम में? सो वल्लीज फेवरेट पास टाइम was to stand in front doorway of her house and watch what was happening in the street outside. वल्ली का सबसे मन पसंदीदा पास टाइम था वो अपने घर के गेट के बाहर खड़े रहना एंड वॉच और देखना व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड कि बाहर गली में हो क्या रहा था. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2. What was a source of unending joy for Valli? And what was her strongest desire? What was a source of unending? क्या ऐसा था जो उसके लिए अनएंडिंग जॉय था, मतलब जो कभी ना खत्म होने वाला खुशी देने वाला सोर्स था. एंड व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, और उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उसकी डिजायर क्या थी. A source of unending joy for वल्ली, वल्ली के लिए कभी ना खत्म होने वाली खुशी was the sight of the bus that traveled between her village and the nearest town. उस बस को देखना उसके लिए unending joy था. That bus that traveled between, जो विलेज और गांव, शहर और गांव के बीच में ट्रेवल करती थी. Filled with a new set of passengers each time, जो हर बार किसी ना किसी नए पैसेंजर्स के सेट मतलब ग्रुप के साथ जो है भरी रहती थी. एंड इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट, उसकी गली से पास होती थी, डेली उसकी गली में से होकर गुजरती थी वो बस. सो हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन दैट बस. एक्चुअली शी वांटेड टू राइड, वो उस पर राइड करना चाहती. She literally want that she will be on that bus as a passenger, because when she saw the new set of passengers every time, so there was a curiosity in her mind to be the part of that bus, to be the member of that bus as a passenger. So her strongest desire was to ride karna on that bus, us bus पे. Nextly, in question number 3, what did Valli find out about the bus journey? वल्ली को बस की यात्रा के बारे में क्या पता चला? एंड हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, और उसने ये डिटेल्स निकाली कैसे? एक्चुअली व्हेन वल्ली had the strongest desire to be the part of the bus and was to ride on that bus, so she wanted to get all the information that she want to collect for the bus journey. So what did she find out? उसे मिला क्या? Wally find out that the town was 6 miles from her village. जो शहर है वो उसके गांव से 6 मील की दूरी पर है. एंड द फेयर, और जो किराया है दैट वाज 30 पैसे वन वे, कि एक तरफ आने का एक तरफ जाने का जो किराया है वो 30 पैसे है. एंड द ट्रिप ऑफ द टाउन टू 45 मिनट्स, वो 6 मील का रास्ता 45 मिनट्स में जो है वो कंप्लीट होता है. एंड ऑन रीचिंग द टाउन, जब वो बस शहर पहुंच जाती है, इफ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी सीट पर बैठी रहे, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और बाकी के और 30 पैसे दे दे, सो शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी बस पे वापस आ सकती है. एंड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, और उनको ये डिटेल्स मिली कैसे? बाय लिसनिंग केयरफुली टू द कॉन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल. उसको वो इन्फॉर्मेशन मिली, उनकी जो बातचीत थी उनके नेबर्स और उनके जो पीपल थे जो ट्रेवल करते थे यूजुअली, उन लोगों से बातचीत करके.
who regularly used the bus, जो रेगुलरली उस बस को यूज करते थे. She also gained information by asking them a few questions. और उसको इन्फॉर्मेशन और कुछ क्वेश्चंस पूछ के कि किसी किसी से पूछ लिया, कभी किसी से पूछ लिया. सो बाय दैट वे ऑल्सो. सो वल्ली फाइंड आउट द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज. उसने देखा कि जो, so these are the little bit introduction. These are the little bit information regarding that journey. That the way is of 6 miles. The fare is 60 paise, means 30 paise one way, and it took 45 minutes to reach the town. And again, after visiting, after reaching the town, after that same 45 minutes to come back to the village. So all these information she got about the bus journey, and she got the information by the neighbors and asking questions from passengers. Nextly, in question number 4, what do you think वल्ली was planning to do? आपको क्या लगता है कि वल्ली जो है वो क्या प्लान कर रही थी? Why she wants to get the information? Why she collected the information? So वल्ली was planning to travel on that bus. वल्ली जो थी वो उस बस पे ट्रेवल करने का प्लान कर रही थी. नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 5, why does the conductor call वल्ली मैडम? नाउ व्हाट इज द रीजन कि कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कह के क्यों बुलाया? When the conductor stretched out his hand to help her get on the bus. When the conductor, जब कंडक्टर ने हाथ बढ़ाया to help her get on the bus, उसको बस में चढ़ाने के लिए जब हाथ उठाया, so Valli said commandingly that she could get on by herself. वल्ली ने क्या कहा? कमांडिंगली दैट शी कुड गेट ऑन बाय हरसेल्फ. उसको कमांड करते हुए बोला कि वो खुद से चढ़ जाएगी. शी लिटरली नो नीड ऑफ हेल्प एंड दैट शी डिड नॉट रिक्वायर हिज हेल्प. कमांडिंगली मतलब पूरे रोब से कमांड देते हुए उसने उसको बोला कि मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है. शी डिड नॉट एक्ट लाइक अ चाइल्ड. वो एक बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर रही थी, बट एज अ ग्रोन अप गर्ल, और एक ऐसी मतलब बिल्कुल युवा जवान लड़की की तरह बिहेव कर रही थी. एंड देयर फॉर द कंडक्टर कॉल्ड हर मैडम. इसलिए उस कंडक्टर ने उसको क्या बुलाया? मैडम कहकर बुलाया. सो व्हेन द कंडक्टर stretched out his hand, so that's why he called her madam, because he act like that. Okay, she was a young girl and she acts like a grown up girl. So that's why the conductor said her to madam. Nextly, question number 6. Why does Wally stand up the seat and what does she see now? वो सीट से खड़ी क्यों हो रही थी एंड वो क्या देख रही थी? वल्ली stood up. वल्ली खड़ी हो जा रही थी on her seat because her view was cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. वल्ली stood up. अपनी सीट पर खड़ी हो गई because the view was cut off by the canvas blind. क्योंकि जहां वो बैठी थी तो विंडो की जो कैनवस थी ना उससे जो बाहर का दृश्य था ना वो कट रहा था, और विंडो के नीचे का लोअर पार्ट जो था वो जो सीन था बाहर का, शी इज नॉट एबल टू लुक दैट. सो शी स्टूड अप टू लुक ओवर द ब्लाइंड. इसलिए वो उस छुपे हुए हिस्से को देखने के लिए खड़ी हो गई थी. एंड शी सॉ दैट द रोड वॉज वेरी नैरो. और उसने देखा कि जो सड़क थी ना वो बहुत ही तंग थी. एंड ऑन वन साइड ऑफ विच देयर वाज अ कैनल एंड बियॉन्ड इट वर पाम ट्रीज. उसने देखा कि एक तरफ रोड के एक तरफ कैनल मीन्स रिवर, नदी, एंड बियॉन्ड इट और उससे आगे पाम ट्रीज थे, ग्रासलैंड्स थी, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स थे एंड ब्लू स्काई. एंड लिटरली it was very awesome view. It was such an amazing view that she had seen just out of the window. On the other side, there was a deep ditch
Deep ditch means खाई, गहरी खाई, and many areas of green fields, और दूर दूर तक हरे भरे खेत उसको दिखाई दे रहे थे. So it means the view, the scenario is very awesome, and she wanted to see that scenario, that scene. So by that way only, she stood up at the seat, on her seat. So she stood up to look over the blind, to look over the road where one side there was a canal with palm trees, grassland, mountains, and blue sky. And there was a deep ditch and many areas of green fields. Nextly, in question number 7, what does Valli tell the elderly man when he calls her a child? वल्ली ने उस बूढ़ी औरत को क्या कहा जब उसने उसको बच्चा बोला. अब वल्ली को बच्चा बोल दिया, भड़क गई. सो व्हेन द एल्डरली मैन, जब उस बूढ़े आदमी ने टोल्ड हर अ चाइल्ड, उसको एक बच्चा बुलाया, बेटा बुलाया, बच्चा कहकर बुलाया. सो वल्ली टोल्ड हिम दैट देयर वाज नोबडी ऑन द बस हु वाज अ चाइल्ड. इस बस में कोई नहीं है जो छोटा बच्चा है. शी हैड पेड फेयर ऑफ 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स. उसने हर किसी की तरह 30 पैसे का किराया दिया है. So you are not able to speak that I am a child. If I am a child, how can I give a fare of 30 paise? I had already given the complete amount of ticket, one ticket, so it means I am also younger one. I am also elder one. So I am not a child. Okay. So she replied in that way that there was nobody on the bus who was a child and she had paid her 30 paise like everyone else. Nextly, in question number 8, why didn't Valli want to make friends with the elderly woman? Valli उस औरत को, बूढ़ी औरत को, want to make friends, वो क्यों अपना दोस्त नहीं बनाना चाहती थी? Valli did not want to make friends with the elderly woman. वो उस बूढ़ी औरत को अपना मित्र इसलिए नहीं बनाना चाहती थी because she found her absolutely repulsive. क्योंकि देखा उसने कि वो जो औरत थी ना वो बिल्कुल रिपल्सिव, मतलब अपोजिट बिहेवियर की थी. शी सॉ दैट द वुमेन हैड बिग होल्स इन हर ईयर लॉब्स. उसने देखा कि उस औरत के कानों में बहुत लंबे लंबे होल, छेद थे. एंड वेरी अगली इयरिंग्स इन दैट, और बहुत भद्दे से इयरिंग्स उसने पहने हुए थे. शी वॉज वेयरिंग वेरी अगली इयरिंग्स. शी कुड स्मेल द बिटल नट द वुमेन वॉज चूइंग, और उसे स्मेल आ रही थी उस सुपारी की जो वो औरत खा रही थी, पान सुपारी. एंड कुड सी द बिटल जूस दैट वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू स्पिल ओवर हर लिप्स. और उस पान सुपारी का जो जूस था ना वो उसके लिप्स पे बाहर निकल निकल के आ रहा था. एंड दैट इज वाई शी डिड नॉट वांट टू सोशलेबल विद हर. इसलिए वो उसके साथ ज्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहती. सो वल्ली literally don't want to make the friend of elderly woman because she was absolutely repulsive and she had a very ugly earrings in the big holes of earlobes. And the main negative point that Valli felt that she could smell the betel nut the woman was chewing. So that's why Valli did not want to make friend with the elderly woman. Okay, got it? Okay, good. Nextly, in question number 9, how did Valli save up money for her first journey and was it easy for her? वल्ली ने पहली यात्रा के लिए पैसे बचाए कैसे? एंड हाउ इट वाज इजी फॉर हर, और क्या उसके लिए पैसे बचाना आसान था?
Valli had carefully saved whatever stray coins came her way. कभी भी छुट्टे पैसे उसे मिलते, वो उसको संभाल के रख लेती। जैसे कभी 1 रुपया मिल गया, उसको जोड़ लिया, 2 रुपये मिल गया, उसको जोड़ लिया। तो कभी भी छुट्टे पैसे मिले, जोड़ लिए। Resisting every temptation to buy paper mints, toys, balloons, and the like. वो अपने लालच को हमेशा दबा लेती, वो कुछ भी नहीं खरीदती थी। कभी कोई टॉय नहीं खरीदा, कभी कोई बलून नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदा। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड 60 पैसे। फाइनली उसने 60 पैसे बचा लिए, जमा किए। एंड नो, इट वाज नॉट इजी फॉर हर। उसके लिए ये बचाना इजी नहीं था, स्पेशली एट द विलेज फेयर। स्पेशली तब जब एक दिन वो गांव में एक मेले में गई। एंड शी वाज टेम्प्टेड टू राइड द मैरी गो राउंड। और वो झूले पर झूलना चाहती थी। ऑल्दो शी हैड मनी, अब उसके पास पैसे भी थे, वो झूलना भी चाहती थी, गांव में मेला भी था। बट शी suppressed her strong desire, लेकिन उसने अपनी इच्छा को दबा दिया। एंड saved the money, और पैसे बचाए। सो फॉर द पर्पस फॉर बस राइड, सिर्फ बस में यात्रा करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 10, what did Valli see on her way that made her laugh? वल्ली ने ऐसा क्या देखा रास्ते में that made her laugh, जिससे उसे हंसी आई? वल्ली सो यंग काओ, काओ, वल्ली ने गाय देखी। whose tail was high in the air, जिसकी पूंछ हवा में ऊंची ऊंची लहरा रही थी। running light in front of the bus in the middle of the road, वो भागती हुई बस के सामने आ रही थी, रोड के बीचों बीच। द बस स्लोड, अब बस ड्राइवर ने क्या किया, बस को थोड़ा सा स्लो कर दिया। एंड ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली, और जोर जोर से हॉर्न बजाए। हाउएवर, द मोर ही होंग, अब जितना ज्यादा वो हॉर्न बजाता जा रहा था ना, द मोर फ्राइटेंड द काउ बिकेम, काउ उतनी ही डरती जा रही थी। एंड इट केप्ट रनिंग फास्टर एंड फास्टर, और उतनी तेज दौड़ दौड़ के वो भाग रही थी। राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने ही। Valli found it so amusing that she had tears in her eyes. वल्ली फाउंड इट, वल्ली ने देखा, सो अम्यूजिंग, बहुत ही, मतलब वो इतनी खुश हो गई इस चीज को देखकर कि हंसते हंसते, हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। एट लास्ट, लास्ट में द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, जो गाय थी वो रोड से नीचे उतर। सो इट मीन्स there was a cow, and the scene of the cow is very uh, amused Valli that she made her, it made her laugh. इससे वो हंसने लग गई। Next में question number 11. Why didn't she get off the bus at the bus station? Why didn't she get off the bus at the bus station? बस स्टेशन पर पहुंचकर वो जब टाउन पहुंच गई तो बस से उतरी क्यों नहीं? She did not get off the bus at the bus station because she had to go back on the same bus. वो बस स्टेशन पे इसलिए नहीं उतरी क्योंकि वो उसी बस से वापस घर जाना चाहती थी। And she took out another 30 पैसे from her pocket. उसने अपनी पॉकेट से दूसरे और 30 पैसे दिए and handed the coins to the conductor. और कंडक्टर को वो पैसे उसने दे दिए, 30 पैसे again, and she just wanted to ride on the bus. क्योंकि वो बस में सिर्फ किस लिए आई थी?